Good morning guys, welcome back to the channel. It's my 18th day in Varanasi. I'm at Varanasi station right now and leaving for Delhi. The reason I've been here for so long is about to arrive here at the platform. I've never seen so much publicity and interest for the launch of a new train. Today is 17th of February 2019 and it's the first commercial run of Train 18 or Vande Bharat Express. The train is now arriving from New Delhi. This is going to be the fastest train on the route. 8 घंटे में न्यू दिल्ली टू वाराणसी एंड आई विल बी टेकिंग द फर्स्ट जर्नी फ्रॉम वाराणसी टू न्यू दिल्ली. देखते हैं कितने घंटे में पहुंचते हैं. ट्रेन इज हियर एंड नाउ आई एम गोइंग टू गेट इन. किसी ट्रेन को आज तक इतना भाव नहीं मिला होगा कभी. So this is the chair car. I'm in seat 10 right now. And automatic doors, awesome. And now entering the executive chair car. So this is a 2x2 configuration. बहुत passengers are requested not to get into the train. So right now the train is being prepared for the return journey and खतरनाक लेवल की सफाई चल रही है अंदर भी और बाहर भी. I hope this continues at all times. मैं घुस तो गया था अंदर लेकिन फिर मेरे को नीचे उतार दिया गया थोड़ी देर में बिकॉज देयर वाज क्लीनिंग गोइंग ऑन एंड अब फाइनली द डोर्स हैव बीन ओपन्ड. लेट्स गो इन. The space in the overhead cabin is like बहुत सही. शताब्दी में भी इतना नहीं होता. ये काफ़ी स्पेशियस बना है. Service has begun. न्यूज़पेपर मिल रहा है ऑलरेडी. I of course reserved a window seat. लेकिन this is going to be in the opposite direction of running of the train. अगर you need the changing direction वाला then you need to head to the executive chair. So this is upright and seat के नीचे there is a lever. इसको pull करके you have to pull the seat ahead for the recline. Basically seat पीछे को नहीं जा रहे. It's coming आगे. And there is a convenient leg rest as well. Cool. The charging points are located below the seat, like right here. वाराणसी जंक्शन स्टेशन से नई दिल्ली स्टेशन तक जाएगी. They are touch based reading lights here. ये ऑफ करने के लिए वापस बस टच. कूल. सभी यात्री ध्यान दें, यह ट्रेन कुछ ही दिनों में चलने वाली है. स्वचालित दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे. जो हमारे साथ यात्रा नहीं करने वाले हैं वो कृपया गुजर जाएं. And finally the train is on its way to Delhi. It's 4:20 right now and we should be in Delhi by 12:20 if the 8-hour travel time is maintained. Let's see, record set hota hai ki nahi. The train has just 2 commercial stoppages, one at Allahabad and one at Kanpur. Allahabad should come after 1.5 hours and Kanpur 2 hours after Allahabad and वहाँ से फिर 4.5 घंटे to Delhi.
There are CCTVs throughout the train, and in case of an emergency, you can even talk directly to the driver. जैसा metro trains में होता है, the talkback system. The train will soon have internet-based Wi-Fi, but right now there is Wi-Fi which you can connect to and access the entertainment system. I'm trying to figure out how to connect to that. क्योंकि कनेक्ट तो हो रहा है बट आई एम नॉट श्योर कोई ऐप खोलना है या क्या करना है टू एक्सेस द एंटरटेनमेंट. सो आई फिगर्ड आउट द वाईफाई. बेसिकली ट्रेन मीडिया वाला जो वाईफाई है उसको कनेक्ट करना है एंड ऑटोमेटिकली ऑन योर फोन और आईपैड एनीवेयर स्क्रीन शुड पॉप अप विद द ट्रेन मीडिया थिंग. अदरवाइज जस्ट टाइप ऑन योर ब्राउजर एंड इट विल कम अप. एंड देयर आर फ्यू मूवीज. आई एम श्योर दे विल इंक्रीज द सिलेक्शन ओवर द कमिंग मंथ्स. सही है, नाइस स्टार्ट. इट्स प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम कि मैंने विंडो सीट लिया है बट आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड in what is outside. पूरा कंसंट्रेशन ट्रेन के अंदर. एनीवेज, बाहर का व्यू आज हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ है. एवरीवन इज क्लिकिंग पिक्चर्स एंड मेकिंग वीडियोस. थैंक यू. सो स्नैक्स हैव बीन सर्व्ड. देखते हैं क्या है इसमें. So this is my favorite caramel popcorn. ये राजधानी में भी अब मिलने लग गया है. This is a muffin. This is new. This is a teeny tiny samosa. And from what I read in the reports, this is not fried. This is baked. Tastes normal. And there is fruit juice as well. Thankfully, apple juice. Time to check the washroom. Hi. Okay. Oh, sensor वाला है ये तो. Indian toilet. Nice. Bio vacuum toilet, मतलब जैसा एरोप्लेन में होता है वैसा वाला. The Western style washroom. The walkways between the coaches are cool looking as well. No more dangerous hawa wala area. Automatic doors. So sorry guys, no more hanging out of the door. Yeah. So the train is just entering Allahabad station and just look at the crowd outside staring at the train. अब मेरे को प्राउड फील हो रहा है कि मैंने immediately tickets book कर दिए थे इसके लिए. Definitely a historic day for Indian Railways. So the train has now clocked its highest permissible speed for now, 130 kilometers per hour. The train can run at 180 kilometers per hour, but right now the tracks are not suitable for that. Probably eventually speed बढ़ा दिया जाएगा, but for now 130 is the maximum and we have reached that speed. टाइम फॉर टी और कॉफ़ी. एंड अब कॉफ़ी, चीनी और कॉफ़ी पाउडर और मिल्क पाउडर अलग अलग नहीं है. एवरीथिंग इज मिक्सड इनटू दिस. वी हैव नाउ मेड इट टू कानपुर सेंट्रल एंड ट्रेन ऑलमोस्ट 2 घंटे लेट है. अनदर 4.5 hours फ्रॉम हियर. हियर इन कानपुर द डिनर इज लोडेड इनटू द ट्रेन, सो वी शुड बी सर्व डिनर सून.
So dinner was just served and I am superbly impressed. So the food is from this 5-star hotel in Kanpur, Landmark Hotel, specially for this train. And it looks awesome. देखते खा के कैसा लगता है. So there is rice, dal, chicken curry. There is a veg curry as well. Mixed veg. इसमें मटर ही नजर आ रहा है बस. गाजर भी है, गोभी भी है. गुलाब जामुन, रोटी and wooden spoon. Cool, no plastic. ये तो plastic है लेकिन. This has to be the best food ever served on an Indian train. IRCTC वाले खाने से तो way better. Best thing, chicken curry with boneless chicken. So it's 12:50 and we have made it to New Delhi railway station. 8 घंटे ना सही 8.5 घंटे में तो पहुंच ही गए. It's still a record. I'm reminded of what I thought of Indian Railways when I first got on the Vietnam Railway last year. I'm really so impressed with the train. Like, Indian government do something. And this time I am impressed. So that is all for today, guys. I hope you enjoyed this video. Make sure you like it. Leave a comment below sharing your thoughts about Train 18 Vande Bharat Express. Do you want to get on the train and experience it ASAP or not? Also, I hope you have subscribed to the channel. In case you haven't, make sure you press that subscribe button and the bell icon next to it so you're notified of new videos as soon as they are published. Bye bye, I'll see you next time. नए कार में पॉलीथिन लगा हुआ दिखता है. यहाँ पे पहली बार नए ट्रेन में पॉलीथिन लगा हुआ दिख रहा है. Trying to figure the seat controls on the executive chair.